Okay. Time and again, whenever a population of this Mexican tetra fish was swept into a cave and survived long enough for natural selection to have its way, the eyes disappeared. So it's emphasizing whenever a population of this Mexican fish was swept into a cave, whenever this happened, and they survived long enough in this cave for natural selection, matlab ki for breeding to happen. They survived long नेचुरल सिलेक्शन का enough मतलब in ब्रीड. this cave, so नेचुरल and they सिलेक्शन. reproduced in this cave, adapted to their environment, and then they passed on their genes to their offsprings. हम्म. Then उनके offsprings में the eyes disappeared. नहीं, नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब है? Natural selection मतलब उन्होंने when they were for a very long time present in the cave, and when they adapted to their environment, तो उनका जब उन्होंने जब reproduce किया, उनके जो offsprings थे उसमें eyes नहीं थी. Yeah, I think yes. So something like that. So natural selection, I think the way I understand is कि it's a natural selection. मतलब तो बेसिकली जो भी जिस एनवायरनमेंट में एज यू आर सेइंग दे अडेप्ट टू इट, या फिर हम्म. ऐसे कह लो कि अगर बॉडी में 100 फीचर्स हैं तो अगर कुछ फीचर्स ज़्यादा यूज़ होते हम्म. हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हाँ. फीचर्स और शार्पन हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे, और जो फीचर्स यूज़ नहीं होते हैं वो फीचर्स ऑलमोस्ट लेफ्ट, दे विल बी sort of they'll disappear or they'll become हम्म. much blunter. Right, right. Yeah. Yeah. Okay. Uh, so इसमें what happened is their eyes disappeared in their offspring. So उनका eyes was sort of something that they would find that it's redundant. So उनका eyes चला गया. Hmm. But it's not that everything has been lost in cave fish. ऐसा नहीं, because eyes disappeared doesn't mean कि they lost everything. ऐसा नहीं है हर एक organ उनका चला गया. It's just that we are told that eyes have gone. Yeah. Okay. Many enhancements have also happened. तो काफी सारे enhancements were also there Right. that happened in their offsprings. Maybe कुछ physical changes होंगे या कुछ भी होगा. I think हाँ, मतलब the this author is the will tell. past, Yeah. right, to to the disappearance. तो एक तो हो गया कुछ चीजें डिमिनिश हुई हैं, जैसे वो आइज डिसअपियर ही हो गई हैं. Yeah. वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ लॉस्ट हो गया है या सब कुछ डिमिनिश हुआ है. Mm. कुछ काफी एनहांसमेंट्स भी हुई हैं, मतलब काफी चीजें इंप्रूव भी हुई हैं. Right. Right. एंड इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आइज क्यों लूज होगी, तो मतलब यू कैन पॉसिबली रिलेटेड टू कि वो केव में है. तो हाँ, वो वहाँ पे टोटल डार्क होगा तो. हाँ, तो आइज की शायद कुछ फायदा है भी नहीं. Yeah. वैसे तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि टोटल डार्क में अ, कई बार हो सकता है इन सम केसेस आइज कुड बिकम वेरी वेरी शार्प आल्सो सो दैट दे कैन सी इन द डार्क. Mm. Mm. Yeah. वो भी हो सकता था, बट यहाँ पे हो गया कि आइस का यूज ही नहीं है तो दे डिसअपीयर्ड. Yeah. यप. Mm. Okay. Studies have found that cave dwelling fish can detect lower level of amino acids than surface fish can. So perhaps this sort of tells कि क्या enhancement हुए जो last line में लिखा था. Many enhancements में they can detect lower level of amino acids. उसका कुछ that would have some benefits for them. मतलब एटलीस्ट इतना तो समझ आ रहा है कि दे हैव बिकम मोर सेंसिटिव, Mm. Mm. कि कम लेवल ऑफ अमीनो एसिड्स भी डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो द सेंसिटिविटी हैज गॉन अप. Right. So Yeah. that sensitivity has gone up seems to be an enhancement. Mm. Yeah. They also have more taste buds and a higher density of sensitive cells alongside their bodies. So they are developed more taste buds and a Wait, higher. एक सेकंड. I think we are on the wrong link, man.
सॉरी, डिड आई, आर वी ऑन द राइट लिंक? Today, yeah, I just joined from the same link. अच्छा, आपने वही कैलेंडर ओपन किया? आपके ईमेल से वो जो लिंक भेजा था। अच्छा, हाँ फिर तो सही होगा, बट मुझे जस्ट थॉट कि कहीं ये ना हो कि मैं अपने पर्सनल लिंक पे कर रहा हूँ यार। एक सेकेंड जस्ट। हाँ, ये तो वही वाला है। हम्म, ठीक है, सॉरी। या, गुड। they also have more taste buds and a higher density of sensitive cells alongside their body. So this is again an enhancement कि उनका taste buds बढ़ गया and they now have more sensitive cells, high density alongside their bodies. That's an enhancement या, that let them sense water pressure and flow. So yeah, वही उनका जो sensitive cell बढ़ गया, now they can sense water pressure and flow more better than वो जो surface fish can. Yeah. बेटर तो नहीं लिखा है, लिखा है बट इसकी वजह से दे कैन सेंस वाटर प्रेशर एंड फ्लो, तो एज इफ कि शायद वो Hmm. पहले नहीं कर पाते होंगे। Hmm. Yeah. या, Right. Hmm. ठीक है। So perhaps this passage sort of tells कि whenever these Mexican fishes are swept in caves and they survive long enough for them to reproduce, and when evolution happens, their eyes are lost, but many enhancements also happens in their offsprings. राइट, राइट, ठीक है, सही है। Yeah. Okay. Next, killing the processes that support the formation of eye is quite literally what happens. Killing the processes that support the formation of eye. This tells ki how eyes are formed. Those processes of formation is killed, and that is what exactly happens. कि मतलब eye is formed and those processes are killed. Yeah. मतलब the processes that form eye, those processes are killed. हाँ, जिस Yeah, प्रोसेस से सपोर्ट मिलता है फॉर्मेशन को, yeah. वो प्रोसेसेस आर किल्ड। Right. राइट, ठीक है। Just like non-cave dwelling members of the species, so surface fish and like just like non-cave dwelling, all cave fish embryos start making eyes. मतलब दो these species, दो these cave species में eyes disappear होती है, but just like these non-cave dwelling members, these cave fish also start developing eyes, start making their eyes. Formation या, उनका तो भी start होता है, just like हाँ, तो non. राइट, तो जो नॉन केव वाली फिश हैं और ये केव वाली फिश हैं, दोनों में स्टार्ट तो हो रहा है, Start, yeah, yeah, तो फिर शायद बाद में किल हो रहा होगा वो प्रोसेसेस। राइट, right, स्टार्ट के बाद तो ऐसा नहीं कि स्टार्ट ही नहीं हुई, yeah, स्टार्ट हुई एंड देन दे वर किल्ड, समथिंग लाइक दैट। yeah. But after a few hours, cells in the developing eye start dying until the entire structure had disappeared. So yeah, उसमें form होता है, but after a few hours, cells in the developing eye start dying, and then the entire eye is wiped out. या, So yeah, that's what's happening. ठीक है। Start हो फिर वो खत्म हो जाती है. Okay. This developmental biologist Riddle, he thinks that this apparent inefficiency may be unavoidable. He's thinking कि ये जो हो रहा है inefficiencies, he's sort of telling inefficiencies कि वो आई थोड़ा डेवलप हो रहा है उसके बाद वो डिसअपियर हो रहा है पूरा. दिस इनएफिशिएंसी में बी अनअवॉइडेबल. इसको ऐसा नहीं है कि it's sort of you cannot avoid that, it has to happen. राइट, तो इनएफिशिएंट, राइट, एफिशिएंसी वुड हैव कि वो बनना ही ना शुरू होती, राइट, हाई। Right. Yeah. तो मतलब क्योंकि इवेंचुअली तो मरना ही है, तो बनाना ही क्यों है। तो Right. इनएफिशिएंसी है कि पहले बनाया थोड़ा सा, बट फिर Hmm. बाद में बनना शुरू हो गया, तो कुछ रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, राइट। Mm-hmm. सो दैट्स इनएफिशिएंसी।
Uh, Interestingly, it's saying that apparent inefficiency Seems like कि वो seems like inefficiency, but क्योंकि वो unavoidable कह रहा है तो perhaps overall it may not be inefficient from the overall perspective. right. Yeah. Yeah, Mm. Then what Riddle says is the early development of brain and the eye are completely intertwined. They happen together. Okay, so he's sort of trying to explain why it's unavoidable. Key early development of the brain and the eye are completely intertwined. They're very linked together. So it's like brain or eye का development happens together. right. Yeah. So Hmm. Go on. so perhaps that is why कि आई उसमें लिखा है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन सो दैट्स व्हाई आई का अर्ली डेवलपमेंट होना जरूरी है सो दैट ब्रेन इज आल्सो डेवलप्ड. Right, right. तो इसलिए वो इनएफिशिएंसी जरूरी है कि या अगर आई को बिल्कुल ही ना बनाए तो ब्रेन भी नहीं बनेगा. So that's more. राइट. Yeah. ओके. She says that means the least disruptive way for eyelessness to evolve maybe to start making an eye and get rid of it. So the least disruptive way would be eye को थोड़ा सा form करो and then you get rid of it. He's saying least disruptive because otherwise if this would not happen तो brain भी form नहीं होगा and that would be most disruptive maybe. Yeah, yeah. सही है. Yeah. Okay. इस पैसेज में द ऑथर इज सॉर्ट ऑफ टेलिंग कि why the process of eye formation has to start and then killed and how Right. it's the least disruptive way. Yeah, yeah. सही है. Yeah. Okay. It's easy to see why cave fish would be at a disadvantage if they were to maintain expensive tissues they aren't using. This sort of tells ki why this cavefish would be at a disadvantage if they have to maintain something like the eyes they won't be using. So मतलब अगर उनके पास आई होती they would have eye they would be at a very disadvantage. हम्म. हाँ, क्योंकि उसको यूज नहीं करना उन्होंने Yeah, yeah. तो उसको बोल रहा है एक्सपेंसिव टिश्यू. Hmm. तो एक्सपेंसिव could be in terms of resources जो वो यूज करेंगे. Hmm. The food I think वो बहुत एनर्जी कंज्यूम करता होगा. Yeah, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स कुछ भी कंज्यूम करते होंगे. दे आर एक्सपेंसिव रिसोर्सेज के टर्म्स में. दे आर एक्सपेंसिव. तो अगर yeah, यूज नहीं हो रहे हैं तो फिर उसको इतना रिसोर्सेज क्यों लगाने वहाँ पे. right. राइट. Okay. Since relatively little lives or grows in their caves, the fish are likely surviving on a meager diet because relatively little lives or grows मतलब as compared to what was outside the cave. इस केव में बहुत ही the ecosystem is very less बहुत कम animals or plants and that grows. So राइट. fish are likely surviving on a very basic बहुत ही कम diet पे राइट. and mostly on bat feces and organic राइट. waste that washes in during the rainy season. So it's because very little grows, so they just depend on वो जो waste from bat and the organic waste, and which only happens in the rainy season. They only get this food in the rainy season. राइट. राइट. So yeah, it's sort of connecting it to the previous sentence कि why perhaps उनके पास resources की बहुत कमी है. या. Yeah, yeah. हाँ, तो इसलिए बहुत Hmm, इफिशिएंटली यूज करना जरूरी है. right. इसलिए वो आइस को नहीं रख सकते. Yeah, yeah. Hmm. राइट. Okay. Researchers keeping cavefish in labs have discovered that
Genetically, the creatures are exquisitely adapted to absorbing and storing nutrients. So perhaps इसमें क्या researchers ने labs में इन cavefish को रखा और they discovered what कि these creatures have a unique ability to absorb and store nutrients within, because क्योंकि उनको बहुत कम खाने को मिलता है, they are very meager diet, so they for their survival what they do is they have this capability to absorb and store nutrients. राइट, राइट। Yeah. ठीक है। So perhaps the gist of the passage is कि if cavefish would have eyes, it would be disadvantageous for them, because these eyes would not have any use in the caves, and perhaps they would have to support them then with a very meager diet. So overall, it's just saying, it's giving a justification ki why the eyes are not there, and it's justified for them. या या राइट, Yeah. कि उनकी मेगा डाइट है, खाने Yeah. को कम है, और तो फिर वो एक्सपेंसिव टिश्यूज को क्यों रखेंगे अपने पास जिनका यूज नहीं है। राइट। Right. Right. या Yeah. Okay. Fats can be toxic for tissues. Rohner explains. Fats can be toxic for tissues, so they are stored in fat cells. Because fats are toxic, they are specifically stored in these fat cells. तो टिश्यूज के लिए टॉक्सिक है, तो इसलिए फैट सेल्स में स्टोर करते हैं। तो मुझे, जैसे मुझे नहीं पता डिस्टिंक्शन क्या है फैट मुझे सेल। मैंने भी यही से पूछा कि मतलब कि सेल्स और टिश्यूज में क्या डिफरेंस होता है, और क्या मतलब इफ आई एम स्टोरिंग इन अ सेल, तो अल्टीमेटली टिश्यू में ही स्टोर हो रहा है या फिर कैसा स्टोर, तो वो सो वाला एक्सप्लेन करने में इट टुक टाइम. हाँ तो खैर, मुझे वैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे अभी भी नहीं पता, मैंने नहीं पूछा है इसे, तो आई डोंट नो। तो बट आई अंडरस्टैंड इसके, ऐसे कुछ टिश्यूज अलग होते हैं, हम्म. आ, और फैट सेल्स अलग होते हैं। फैट सेल्स सीम्स लाइक अ काइंड ऑफ सेल्स, हम्म. कि क्या पता नॉर्मल सेल्स होते हैं कुछ फैट सेल्स, आई हैव नो आइडिया। हम्म. मतलब नॉर्मल सेल्स तो चलो पता है बॉडी में सेल्स होते हैं, बट फैट सेल्स अब एक अलग कैटेगरी होती है। हम्म. क्या चीज़ है ये, तो आई डोंट नो। बट जिस तरह से फ्रेम करी हुई है स्टेटमेंट, वी गेट टू नो कि अच्छा टिश्यूज के लिए टॉक्सिक है हम्म. फैट्स, तो फिर इनको फैट्स को फैट सेल्स में स्टोर करते हैं बॉडी में। ठीक है। वैसे जो मैंने उसमें पढ़ा था, जस्ट उसमें ये लिखा था कि सेल्स आर लाइक ब्रिक्स एंड टिश्यूज आर लाइक ब्रिक वॉल ऑफ ब्रिक्स. अच्छा, टिश्यूज में मल्टीपल सेल्स होते हैं? फुल सेल्स से बना होता टिश्यू मल्टीपल सेल से बना होता है? है. तो ये तो फिर थोड़ा अजीब है। बट फैट, ये जो स्पेसिफिकली फैट सेल्स होते हैं, दे हैव अ सॉर्ट ऑफ अ कवरिंग, और अपने अगेंस्ट एक आर्मर अच्छा, होते अच्छा। हैं. दे लेट देम मतलब मिक्स नहीं होने देते हैं. सो राइट, राइट, राइट। हाँ, ठीक है। मतलब दैट मेक सेंस कि बट टिश्यूज में नहीं जा रहा वो फैट कंटेंट, क्योंकि उसके लिए टॉक्सिक है। when these cells get too big, they can burst, which is why we often see chronic inflammation in humans and other animals that have stored a lot of fat in their tissues. So, when these fat cells get too big, they burst. And that is why we often see humans and animals maybe they develop a chronic inflammation. When excess fat is stored in these cells, तो burst होके they tissues में mix होके उसमें then they get inflammation. राइट, राइट। Yeah. ठीक है, सही है। Yet a 2020 study, saying yet, like sort of maybe a contradiction or some, yet a 2020 study by Ronner, Krishnan and their colleagues revealed that
even very well fed cave fish had fewer signs of inflammation in their fat tissues than surface fish do. So इस दो वो पहला पॉइंट सही है कि अगर फैट सेल बर्स्ट हो जाते हैं तो दिस टिश्यू गेट्स इफेक्टेड, इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन इन केव फिश को जब उन्होंने स्टडी किया तो व्हाट दे फाउंड इज कि इवन दो उनके फैट में ज्यादा, दे स्टोर्ड मोर फैट्स देन यूजुअली बर्स्ट हो जाते हैं, बट स्टिल दे हैड लेस इन्फ्लेमेशन देन द अदर फिशेस. Yeah, yeah. ओके, देन इट सेज तो मतलब वही इवन. है, नाउ वी कैन रिलेट इट आल्सो एट द सेम टाइम कि उसमें क्यों रहा हो, क्योंकि खाना कम होता है तो शायद फैट स्टोर कर लेते हो। नॉट श्योर या. कि बाद में ये सब बोल रहा है। हाँ शायद वही लिखा हुआ है। बट ये सब मतलब कोई नई बातें नहीं है, राइट? बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ होती है, या. या. राइट? इवन जो प्लांट्स डेजर्ट्स वगैरह में होते हैं तो दे हैव अ वेरी हाई एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ वाटर, एंड दे कैन स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि उनके पास बाकी लंबे टाइम तक पानी नहीं मिलेगा उनको, राइट? तो ये मतलब अब वो कह रहा है उनको इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही है, तो मतलब दे आर वेरी वेल अडेप्टेड टू स्टोरिंग फैट। तो वो क्यों होगा? नाउ वी कैन रिलेट इट टू कि बात बता रहे एक तरीके से. रेनी सीजन में एक ही बार ही आता है, तो, तो अब स्टोर करके रखोगे पूरा साल चलाना है काम। राइट, राइट. So this sort of tells कि जो जो उनमें एनहांसमेंट हुए, पर आप ये यही बताना चाह रहे हैं ना कि आइस तो एक, हाँ निकल गए कि हाँ ये एनहांसमेंट हुए. हाँ। तो कुछ चीज़ें तो खैर छोड़ दी, वो वैसे भी एक्सपेंसिव, जैसे उसने एक्सप्लेन करा है कि जो चीज़ यूज़ की नहीं है वो क्यों रखेंगे। फिर दूसरी एनहांसमेंट, ये सब एनहांसमेंट ही एक तरह से कि बेटर अडेप्टेड है, इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है आसानी से। ऑल्सो राइट. राइट, आई एम नॉट श्योर कि आपसे बात हुई है, बट टिपिकली ये जैसे मैं बोलता हूँ कि अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट, अब ये बायोलॉजी है, बिजनेस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बहुत सारे जो लॉजिक हैं, और इवन विद इन बायोलॉजी अक्रॉस डिफरेंट सब कॉन्टेक्स्ट, लॉजिक बड़े सारे सिमिलर रहते हैं। तो अगर आप जितनी डेप्थ में, जितनी क्लैरिटी से चीज़ें पढ़ोगे ना, तो आगे चीज़ें फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पढ़नी आसान हो जाएगी। नहीं कि बिल्कुल सेम कॉन्टेक्स्ट आएगा तभी पढ़ना आसान होगा, बिकॉज द लॉजिक्स आर एसेंशली क्वाइट सिमिलर अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट। राइट, एक राइट. बार आपको समझ आ गया एग्जैक्टली हाउ इज इट मेकिंग सेंस, देन इट बिकम्स easier to understand any। नेक्स्ट टाइम वी रीड समथिंग सिमिलर. हाँ, और वो सिमिलर सिमिलर बड़ी तरह से होता है, राइट? एक तो हो गया कॉन्टेक्स्ट सिमिलर है कि बिल्कुल प्लांट्स के बारे में बातें हो रही है, या प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में, एक तो कॉन्टेक्स्ट सिमिलर हो सकता है, लैंग्वेज स्ट्रक्चर सिमिलर हो सकते हैं जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, और उसके अलावा लॉजिक सिमिलर हो सकता है, राइट. इस या. तरह से एक से दूसरी चीजें लीड कर रहे हो कि इसकी से ये कनेक्शन है, तो वो इवन जो कनेक्शन है, जो लॉजिक फ्लो कर रहा है, या. वो वो भी सिमिलर होता है, राइट? अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। या. आई सी. या ओके. Then it says even in their sparse cave conditions, wild cave fish can sometimes get very fat, says Riddle. So even when in their, मतलब जहाँ उनके पास meager diet है और जहाँ when they have very less food, they can sometimes get very fat. Then the author explained this is likely because, presumably because, whenever foods end up in the cave, the fish eats as much of it as possible since there may be nothing else for a long time to come. So that's why they become fat, because they eat, जब जब उनके पास जैसे रेनी सीजन में खाना आया, they eat भर के बहुत सारा in bulk, and because they won't get anything for a very long time to come. So that's why they get fat. Yeah. Then the author says, intriguingly, Riddle says their fat is usually bright yellow because of high levels of carotenoids.
उनके फैट्स इंटरेस्टिंगली बहुत देयर फैट इज यूजुअली ब्राइट एंड which shows a high level of carotenoid, which is a substance in carrots that your grandmother used to tell you that it's good for your eyes. So that's interesting क्योंकि उनके पास eyes नहीं है और उनके पास ये substance जो उसमें that's good for your eyes, it's present in high amount. So that is very interesting कि ऐसा कैसे हो गया. अच्छा। हाँ, तो एक तो हो गया कि ऐसा क्या, मतलब इनके पास ये क्या कर रहा है जब यूज का ही नहीं है। हाँ, दूसरा एंगल ये होगा कि इनके पास तो ज्यादा होना ही है क्योंकि यूज ही नहीं हो रहा हाँ, हम्म, हम्म, है। सो इन दैट केस दिस मेक सेंस, क्योंकि नॉर्मल जिनकी हम्म, आंखें तो यूज हो जाता है ये चीजें, इनकी आंखें right, नहीं, तो फिर पड़ा रहता है। yeah, yeah, हम्म, yeah. या पर आप जिस इसमें यही है कि नॉर्मली when fat cells gets bigger they burst and harm the tissues, cause inflammation, but cave fish में even when हम्म the fat cells gets bigger they don't likely burst, or there are few cases of inflammation because of जो उसमें enhancements हुई है evolution की वजह से. और then it tells कि हाँ interestingly these fat cells which are stored they contains this substance carotenoids which is good for the eyes even though these cave fish do not have eyes. या अब आप फिर से इवन दो करके बोल रहे हो। हाँ, आ, फिर से आपके दिमाग में आएगी नहीं होना चाहिए था वो ऐसे हाँ, एक्शन उसने। हाँ, इंट्रीगिंगली बोला है। हाँ. आ, आ, हाँ, तो उस सेंस में उसके लिए भी इंट्रीगिंग। अब इंट्रीगिंग मतलब मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसने वो वर्ड ऐसा इंटरेस्टिंगली यूज किया है ना कि उसको लग ऐसा ही माइट बी लगा, थिंकिंग ऐसा नहीं होना मुझे चाहिए. ऑब्वियस नहीं लग रहा उसको कि ऑब्वियस। हम्म, राइट, क्योंकि दूसरा जो इंटरप्रिटेशन मैंने दिया उसके हिसाब से ऑब्वियस है, तो उस केस में इंट्रीगिंग इंटरेस्टिंग यूज करने का सेंस नहीं है। तो उसको राइट. लगा अच्छा इनके लिए तो यूजेबल नहीं है, तब फिर इतना सारा क्यों है इनके पास। तो इस तरह से वो कह रहा है। ठीक है। The first thing that came to our mind, of course, was that they were accumulating these because they don't have eyes. वही जो आप बता रहे थे कि रिडल ने भी यही कहा कि द फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में है कि दे आर एक्यूमुलेटिंग दिस बिकॉज उनके पास आईज नहीं है तो यूज नहीं कर पाएंगे कहीं. तो या says करेक्ट। yeah, करेक्ट। yeah. So in this species such ideas can be tested. So in this Mexican fish such ideas we can test कि ऐसा इसीलिए ही हो रहा है कि because they don't have eye that's why they're accumulating, so we can test it. करेक्ट। So how would they test this? Scientists can cross surface fish and cave fish and look at what their offsprings are like. So how would they test this कि वो interbreeding कराएंगे fish with eyes and fish without eyes and see what happens. या Yeah. So when that's done, Riddle says researchers see no link between eye presence or size and the accumulation of carotenoids. मतलब जब वो टेस्ट हुआ तब मे बी ऐसा हुआ होगा कि जिनके पास आईज नहीं है उनके पास दे वुड हैव लो कैरोटेनॉइड्स, और जिनके पास आईज हैं उनके पास भी लो कैरोटेनॉइड्स, तो देर इज नो लिंक. या या और दोनों के पास हाई कार्टेनॉइड्स हैं, कैरोटेनॉइड्स हैं। मतलब जो भी है बेसिकली कोई लिंक नहीं है। मतलब जो हम लिंक एक्सपेक्ट कर रहे थे वो होगा कि आई एब्सेंस जहाँ पे होगी वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ कैरोटेनॉइड्स होंगे, राइट, जहाँ पे आई होगी वहाँ पे लो अमाउंट ऑफ कैरोटेनॉइड्स होंगे, बट ऐसा हम पाया नहीं है हमने। राइट, राइट. या ओके. So, yeah, some eyeless cavefish had fat that was practically white, indicating lower राइट। carotenoids level. So, eyeless maybe they found some fish कि जहाँ पे low carotenoids राइट। level है. So, हम्म what instead Riddle thinks these carotenoids may be another enhancement or adaptation to suppress inflammation. So, then he says कि ये कोई this is another enhancement in cavefish में
कि टू सप्रेस दे, क्योंकि हमने पहले जैसे बोला था कि उस उनमें वो इन्फ्लेमेशन सप्रेस हो जाता है। परहैप्स दिस माइट बी द रीजन, कैरोटेनॉइड्स की वजह से दे सप्रेस इट। हाँ, तो कैरोटेनॉइड्स का पर्पस फिर ये नहीं है कि ये मतलब इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि यूज़ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आंखें नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा है बिकॉज इट्स अ बॉडीज अडेप्टेशन टू रिड्यूस हम्म। इन्फ्लेमेशन। राइट। हम्म। राइट। अब एक्चुअली ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता था जो शायद उन्होंने नहीं पूछा है। हम्म। या Which might be important in the wild, as cavefish are likely overeating whenever food arrives. So, because these cavefish they eat a lot when the food arrives, so they riddle connected it with this कि हाँ वो that's why उनको inflammation नहीं हो रहा कैरोटेनॉइड्स की वजह से। करेक्ट करेक्ट। हाँ। ठीक है, सही है। Yeah, that ठीक is है, क्लियर है। हाँ। So it's not that tough of a passage. हाँ, मुश्किल ज़्यादा नहीं है। Yeah. क्वेश्चंस नहीं करे थे मैंने पहले। चलो कर लेते हैं। Okay. All of the following statements from the passage describe adaptation in Mexican tetra cavefish. All of these following would describe वो enhancement जो उनमें, except one would not describe such एक जो enhancement हुआ है, I think. राइट। Yeah. Since relatively less lives or grows in their caves, the fish are likely surviving on a meager diet of mostly bat feces or organic waste that washes. But ये तो it's just giving a fact, ये कोई adaptation तो the fish are likely surviving on a hmm, that could be a adaptation, वो survive कर रहे हैं meager diet पे, लेकिन वो तो fact ही है एक, मतलब उसमें कुछ enhancement नहीं दे रहे। अच्छा। मे बी, आई थिंक एक बार बाकी ऑप्शंस पढ़ के राइट राइट। इट्स इजी टू सी why cavefish would be at a disadvantage if they were to maintain expensive tissue they aren't using. It's easy to see why cavefish would be at a disadvantage if they were to maintain expensive tissues. Yeah, that's an it's easy to see why cavefish would be at a disadvantage if maintain expensive tissues they aren't using. Mm, adaptations. I think ये adaptation तो नहीं है. It's just first तो तब भी लग रहा है because they are surviving on a meager diet, that's an adaptation. But second तो I don't think. Even in the sparse cave condition, wild cave fish can sometimes get very fat, and that's an adaptation. They get very fat in they store food. And but when these cells gets too big, they can burst, which is why we often see chronic inflammation wala bhi that's an adaptation. Even in sparse cave condition they can some that's also an adaptation. uh, Surviving on I think second year second is हाउ इज डी एन एडेप्टेशन? when the cells मतलब वो इन्फ्लेमेशन को
उनमें इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है केव फिश में, because of because they might have different types of fat cells, ओके। जिससे या डी आंसर है इसका। ओके। बिकॉज अगर आप डी को पढ़ोगे तो यू आर राइट कि इसके अराउंड अडेप्टेशन है, बट डी इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट अडेप्टेशन। डी इज जस्ट सेइंग अबाउट टॉकिंग अबाउट द फैट सेल्स इन अदर लिविंग बींग्स, कि वो मतलब उनकी बातें कर रहा है ना, जब सेल्स बड़े हो जाते हैं तो बर्स्ट कर देते हैं, इसलिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ह्यूमंस और अदर एनिमल्स हम्म होता है इसमें। तो टेट्राफिश की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है इसमें, हम्म राइट? हम्म कि उनके फैट सेल्स बेटर हैं, इन्फ्लेमेशन ऐसे कोई बात नहीं हो रही है, बात सिर्फ दूसरों की हो रही है यहाँ पे। हम्म, तो इसलिए ये आंसर है जो बी है। इट्स इजी टू सी व्हाई केव फिश वुड बी डिसएडवांटेज। तो वो वही कह रहा है कि जो उन्होंने हाँ मतलब केव फिश इसलिए वो छोड़ देता है, उनको मेंटेन नहीं करता एक्सपेंसिव टिश्यूज को। हम्म weekend nose, which is when you often see a chronic inflammation. तो मतलब आई ऑल्सो डोंट लाइक द ऑप्शंस अ लॉट, क्योंकि मतलब the fish are likely surviving on a meager diet. Uh, मतलब I also had this question कि is this an adaptation or is this a fact to which हम्म they will do some adaptation, right? So I'm not very happy हम्म to see that। और बी में भी कोई adaptation नहीं है, वो just allude कर रहा है, उसकी तरफ indicate कर रहा है, but D हम्म as such is not really describing an adaptation। You have to हम्म go by the question, हम्म। right? But वो भी हिंट हिंट तो डी भी कर रहा है ना कि डी, हाँ बट डी इज फार फ्रॉम दैट। मतलब हम्म हम्म डी मेरे लिए क्लियर है, चलो मतलब क्लियर इन टर्म्स ऑफ कि हाँ ए बी सी तो वर्स ऑफ ही है डी, क्योंकि ओके। डी में मतलब उसके बारे में बात आई नहीं थी टेट्राफिश के बारे में। हम्म वो तो क्लियरली सिर्फ दूसरे लोगों की बात करके खत्म हो गया डी तो। हम्म बात तो टेट्राफिश की शायद अगली स्टेटमेंट में आई होगी, तो पर डी में तो कोई बात ही नहीं है। तो डी तो क्लियरली कोई अडेप्टेशन नहीं डिस्क्राइब हम्म कर रहा है, एल्यूड भी नहीं कर रहा है उसकी तरफ। या ओके। मेक सेंस? या ठीक है। ओके। Which one of the following best explains why the apparent inefficiency is unavoidable? Apparent inefficiency. अच्छा वही वो ब्रेन और आई वाला। या ओके। करेक्ट। Mexican tetra cavefish are similar to non-cave dwelling variants in their early stages of development. Nahi. The inefficiency resulting from eyelessness is compensated by enhancement. Nahi. The lack of light in the cave kills the eye cells. In the developing mix, caves have poor and inconsistent availability of food and parent inefficiency is unavoidable. It's unavoidable. So it's unavoidable तो इसलिए था क्योंकि वो उसके साथ ब्रेन ब्रेन भी डेवलप हो रहा है। द केव the developing lack of mind inefficiency is compensated by enhancement. Similar. I think A is the answer. बाकी हाँ
ये सारे तो बहुत बहुत, लेकिन इसमें तब भी उन्होंने वो एग्जैक्ट एक्सप्लेन नहीं किया है। नहीं, आई थिंक एक्सप्लेन तो करा है, मतलब वही, मतलब मतलब यही तो था इसकी एक्सप्लेनेशन की, इंटरट्वाइंड है ना वो। हम्म। मतलब वो अगर अगर जैसे मैं एक्सप्लेन, मतलब वैसे एक्सप्लेन करना होता है, या फिर इट्स अनअवॉइडेबल बिकॉज brain and brain and eye, they develop together, sort of. That's why it's unavoidable, otherwise brain भी डेवलप नहीं होता। हाँ, राइट। हाँ, तो उसको वो थोड़ा सा उन्होंने हम्म। चेंज करके थोड़ा सा हम्म। इस तरह से लिख दिया, राइट, यू आर राइट, मतलब वो ऑफ कोर्स वो बहुत डायरेक्ट होता, बट हम्म। एसेंशली बात तो यही थी कि हम्म। बाकी सब की तरह, नॉन के फिश की तरह उनको भी पहले आई डेवलप करनी पड़ रही हैं, बिकॉज इनिशियल डेवलपमेंट सेम है। राइट। तो नहीं, मतलब ये तो सेंस में काफ़ी सही है, मतलब क्लियर है। हम्म। ओके। हाँ, और बाकी कोई ऑप्शन बाकी तो, सारे बहुत फार ऑफ है। या ओके। Which one of the following results from the cross between surface fish and cave fish would indicate Riddle's inference from the, इनवैलिडेट oh, sorry, would invalidate Riddle's inference from the experiment? Which one of the following results from the cross would invalidate his inference? अगर दोनों के बीच में लिंक होती कोई क्या इन्फ्लुएंस था क्रॉस में, देन इट वुड उसका इन्फ्लुएंस था क्या? बी दे, because there is no link to, because हम्म, there was no link between आई का साइज और कैटेनॉइड्स, therefore इट इंडिकेट्स दैट वो इन्फ्लेमेशन या को तो सप्रेस मतलब करने के लिए यूज हो रहे हैं। कार्टेनॉइड जो है वो ज़्यादा है के फिश में, नॉट बिकॉज कि उनकी आइज नहीं है, बट बिकॉज कि उनका इन्फ्लेमेशन कंट्रोल। एडेप्टेशन है, राइट। ठीक है, सही है। Only eyeless offspring had yellow fat. Invalidate. If only eyeless would have yellow fat, मतलब eyeless वाले में अगर ज्यादा होता, then I think it would invalidate. Some offspring with eyes had white fat. Some eyeless had white fat. If only eyeless had yellow fat, हाँ अगर first वाला, if only eyeless offspring had yellow fat, then मतलब it would mean कि वो eyeless वाले ही accumulate कर रहे हैं, then he would not be able to infer that जो उसने हाँ, किया। या तो बाकी सब में एक तो सम है, इसमें ओनली है, तो मतलब वी ऑल्सो गेट टू नो कि जिसमें आईज हैं उसमें येलो फैट नहीं है, राइट। आईज हैं उसमें येलो नहीं है, जिसमें आई नहीं है उसमें येलो है, तो देन इट सीम्स लाइक कि येलो हम्म। या कार्टनॉइड्स का लेना हम्म। देना आइस के साथ है, विच इज गोइंग टू इनवैलिडेट हिज एंट्रेंस। ठीक है, सही है। ओके। On the basis of information in the passage, what is the most likely function of carotenoids in Mexican tetra cavefish? Most likely function. Help the fat cells store nutrients? No. To render bright yellow color? No. To control inflammation from the bursting? Yeah, see. या तो ये तो काफी डायरेक्ट ही है। या हाँ, हम्म। ठीक है, क्लियर है। गया या एनी क्वेश्चंस? नहीं, गया। ठीक है, तो आई थिंक दिस वाज क्वाइट फास्ट टुडे।
आई थिंक बाकी लोगों ने इसलिए नहीं ज्वाइन किया, मे बी दिस दिस वाज हो क्वाइट सकता है, इजी पैसेज। हो सकता है आसान लग रहा हो, कुड बी फॉर होली मनाने जा रहे हो घर पे अपने। सही भी हो सकता है। ठीक है, कूल है, तो आई स्केड्यूल द नेक्स्ट वन फॉर द नेक्स्ट संडे। या ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू ठीक। सो मच सीजे, थैंक यू। ओके, ठीक है, बाय।